द वर्क प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम शो पर आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स जो लोगों के काम करने के तरीकों को बदल रहे हैं, उन्हें मदद कर रहा है बेहतर परफॉर्म करने में, ताकि वो अपनी कंपनियों की तरक्की का हिस्सा बन सके। दुनिया और देश में एक उभरता ट्रेंड है कोवर्किंग। वो एक नया कॉन्सेप्ट है और देश के कई शहरों में पनप रहा है। अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एक फ्रीलांसर है लेकिन खुद का ऑफिस स्पेस नहीं अफोर्ड कर सकते, तब भी आप ऑफिस जाकर काम कर सकते हैं। फ़र्क इतना ही है कि आप अपने जैसी सोच वाले लोगों के साथ अपने बजट में और अपने मन चाहे वर्किंग आवर्स के हिसाब से ऑफिस स्पेस शेयर करेंगे। ऑफिस स्पेस शेयर करने का नया ट्रेंड दुनिया और देश में पिछले 5 से 8 साल में उभरा है। आज दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा ऐसी जगहें हैं जिन्हें छोटे बिजनेसमैन फ्रीलांसर्स अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है मुंबई में द प्लेस, जो 2 एंटरप्रेन्योर्स की सोच का एक बेहतरीन नतीजा है। शेखर जो मेरा पार्टनर है और मैं, हम दोनों इंडिविजुअली एंटरप्रेन्योर्स थे और हमने देखा कि मुंबई में जो भी एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग या तो कॉफ़ी शॉप से काम करते हैं या कोई पुराने घर से या कोई पुरानी ऑफिस से काम करते हैं, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता या कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है। तो हमने सोचा कि जब बॉम्बे में करीबन लेट्स से 10,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं और उन्हें पता नहीं कि कहाँ से काम करें, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसी जगह बनाएं जहाँ सब आके काम कर सकते हैं। तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट, एक तो काम करने के लिए डेस्क, चेयर, बेसिक वाईफाई, एसी, इंटरनेट, बेसिक सुविधाएं हों, एंड सेकेंडली शायद मोर इम्पॉर्टेंटली एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे को मिलने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने आइडियाज़ बाउंस करने की, अपने कस्टमर्स को दिखाने की कि ऐसा मेरा प्रोडक्ट है, वैसा मेरा प्रोडक्ट है, या गाइडेंस की। तो ये 2 हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, तो हमने इन 2 ऑब्जेक्टिव से द प्लेस स्टार्ट किया है। $5,500 स्क्वायर फुट, 60 डेस्क और 7 कैबिन वाली इस ऑफिस स्पेस में 60 से 70 एंटरप्रेन्योर्स रोज काम करने आते हैं और ये सभी एक दूसरे से प्रेरणा भी लेते हैं। एक तो इस जगह का माहौल, ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 कंपनियों की एनर्जी एक साथ काम करती है। वीज़ावी अगर मैं एक छोटा सा कमरा ले लूँ जिसमें हम 3-4 लोग बैठे हैं, पता नहीं शायद एक छोटी जगह में आपके थॉट्स भी छोटे हो जाते हैं। तो हाँ, एक सबसे पहला रीज़न तो यहाँ का माहौल है। दूसरा ये भी है कि मैं 8 घंटे की ज़िंदगी अपनी यही बिताने वाला हूँ, आने वाले जो भी साल मैं अपनी कंपनी को दूंगा। तो वो 8 घंटे अगर एक अच्छी जगह में हों जहाँ काम करने में मुझे मज़ा आए, तो इस तरह का ऑफिस एक्चुअली अफोर्ड करने में शायद मुझे 6 महीने लग जाएंगे और प्लेस में मुझे 4 दिन लगे। तो ये भी एक बड़ा कारण। घर पे काम करने से तो बेहतर है यहाँ पे काम करेंगे अगर, तो 2 घंटा भी यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत सारा काम हो सकता है क्योंकि 100% फोकस रहता है। और एक फ़ायदा ये है कि यहाँ इतने सारे दूसरे स्टार्टअप्स है तो रेफरेंसेस मिल जाते हैं, कभी किसी को इंटरसेल हो जाता है, कभी किसी के फ्रेंड को ज़रूरत है तो, और लीड्स मिल जाती है, तो उससे बिज़नेस ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहता है। शुरू के तो पहले 2-3 महीने तक मैं अपने घर से काम कर रहा था, बट घर से काम अच्छे से हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऑफिस स्पेस ढूंढता हूँ, और मैं एक इंडिविजुअल तब अकेला था और एक ऑफिस स्पेस लेता तो काफ़ी बड़ा एक्सपेंस हो जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आके ज्वाइन किया। यहाँ का जो द एक्सपेंसेस इज प्रीटी रीजनेबल, द प्राइस इज रीजनेबल। द प्लेस जैसी जगहों पर आज की यंग जनरेशन को कॉफी शॉप जैसा मजा, ऑफिस जैसी प्रोडक्टिविटी और कॉलेज कैंपस जैसी सोशलाइजिंग मिलती है। इस मिक्स की वजह से ये जगह काम करने के लिए सही माहौल बना पाती हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए मुंबई में ऐसी एक और जगह है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू। ये क्रिएटिव लोगों का अड्डा है, जिसे आप एक क्रिएटिव स्टूडियो भी कह सकते हैं। हम एक टिपिकल कोवर्किंग स्पेस नहीं है, हम एक क्रिएटिव स्टूडियो कहते हैं अपने आप को। और कोवर्किंग इवेंट्स और फिल्म और फोटो शूट्स हमारा कोर है। तो हम ये 3 चीज़ें फ्लेक्सिबली रोटेट करते हुए करते हैं। तो महीने में आप कोवर्कर्स भी पाएंगे यहाँ पर, आप इवेंट्स भी देखेंगे और कभी कभी शूट्स भी होते हैं। विकास जैसे फ्रीलांसर फोटोग्राफर हो या फिर न्यूजीलैंड से आई ये फर्नीचर डिजाइनर, ऐसे लोगों को काम करने के लिए एक बढ़िया जगह के साथ साथ कुछ खास सुविधाएं भी चाहिए होती हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू में इन्हें मिलती हैं। आप अगर बात करेंगे वातावरण की, तो यहाँ पे बहुत ही, मेरे को लगता है बहुत ही अनुकूलित वातावरण है एंड काफ़ी शांत है। यहाँ पे हम लोग आके अपना आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो
फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइडेड हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। सो मेरे को लगता है कि एज ए फ्रीलांसर और अगर आपको किसी ग्रुप या आप अकेला कुछ काम करना चाहते हो तो ये जगह बहुत ही मेरे को अनुकूलित लगी उसके अकॉर्डिंग। For this part of town and this area, I think it's pretty reasonable. And if you're a startup, you don't have to worry about any of those initial startup costs, which people really underestimate. You're going to need to hire out a workshop or a studio or a space, and it's kind of all taken care of here. So you can focus on the main aspect that you want to. So I think cost factor, I mean, it's makes sense considering what other people are doing and considering the kind of co-working space you get. You're not in a cubicle, you're not just stuck in a cubicle. You're free to kind of just use the entire space and you're comfortable. You don't have to kind of like be confined to one space. So in that sense, I think it's one of the, it's a bonus of the space and productivity and everything. ये कोवर्किंग स्पेसेस फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को काफी कॉस्ट एफिशिएंट पड़ती हैं। अलग अलग तरह के पैकेज ये जगहें ऑफर करती हैं, जैसे 10 दिन का पैकेज, 2 महीने में 20 दिन, 1 महीने में 10 दिन वगैरह। ऑफिस की लोकेशन और उसमें कितनी जगह चाहिए, इसके हिसाब से रेंट तय किया जाता है। I found this place like 2.5 years ago, and then it was a photo studio, but a bit dodgy and dark, and I found it for another organization, and I saw the space and I got really, excited about it. I thought it had many possibilities, and as soon as I got the chance, like a year ago, to rent it, I took the opportunity and thought I can make something interesting of it and make it into my favorite studio to work from, and probably other people will also enjoy it. ग्लोबली ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। देश में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के अलावा इस तरह की कोवर्किंग स्पेसेस कोचिन में भी उभर रही हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स और ग्लोबल सोच ही देश की कंपनियों को, ब्रांड्स को ग्लोबल बनाने में मदद करेंगे। आज देश के विकास के लिए हर कंपनी का विस्तार ज़रूरी है और कंपनी को बड़ा बनाने में मदद करता है उनका ह्यूमन कैपिटल। द वर्क प्लेस में आगे देखेंगे एक खास बातचीत दुनिया की जानी मानी ह्यूमन रिसोर्स थिंकर लिंडा ग्रैटन के साथ। Sometimes in our lives, something happens to us that changes the way we think. लंदन बिजनेस स्कूल में राइटर, रिसर्चर और प्रोफेसर हैं लिंडा ग्रेटन। उन्होंने 2005 में हॉटस्पॉट मूवमेंट शुरू किया, जिसमें एक स्पेशलिस्ट रिसर्च और कंसल्टिंग टीम एकेडमिक्स और बिजनेस के बीच लगातार संपर्क बनाए रखती है। सालों से ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर रखती आ रही लिंडा ने 2009 में इस मूवमेंट के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स रिसर्च कंसोर्टियम बनाया, जिसमें मैनेजमेंट, एकेडमिक्स और एग्जीक्यूटिव्स ने एक्सपेरिमेंट किए कि वो कैसे पॉलिसीज या सिस्टम्स को एक साथ मिलकर बेहतर बना सकते हैं। ग्रेटन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बतौर कंसल्टेंट काम करती हैं। 2008 में द फाइनेंशियल टाइम्स ने उन्हें दुनिया के बेस्ट बिजनेस थिंकर के खिताब से नवाजा और कहा कि ये उन लोगों में से हैं जो आने वाले दशक में बिजनेस करने के अंदाज में असल में बदलाव ला पाएंगे। 2011 में लिंडा द टाइम्स की टॉप 15 बिजनेस थिंकर्स की लिस्ट में रही और ह्यूमन रिसोर्स के टॉप 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में पहले नंबर पर लिंडा का नाम रहा। लिंडा से हमने बात की ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में और जाना कि कैसे इंडियन मैनेजर्स वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं। Hello Linda, thanks for joining the Workplace show. You're one of the world's foremost authorities on HR and organizational issues, and you've worked with companies across the world, including Indian companies. What advice do you have for Indian companies on people management? Well, Aparna, I've been coming to India for more than 20 years. And certainly 20 years ago, we'd be saying all the things that the West is doing, and wouldn't it be marvellous if Indian companies do that as well? But what's happened, and I think it's probably in about the last 5 years, that some Indian companies are absolutely world class, and they're absolutely world class in terms of the way that they manage people. So what do I see them doing? Well, I see them really understanding the needs and expectations of young people. India has got a huge number of young people compared to some other countries in terms of the demographics. And I think they're very good at engaging with them, and particularly in the IT sector, Wipro, TCS, Infosys, is just great
at actually reflecting the external technology that young people use with the internal social media. So for example, in TCS right now, you'll see hundreds of thousands of people joined up talking about what they want the organization to be, how they can do their jobs better, and so on. So I think one of the most important things that any company, but certainly an Indian company, can do right now is to use this extraordinary technology we have available to us to really increase productivity, collaboration, and indeed innovation. It's very interesting you talked about young people, and sometimes, you know, there's a feeling that with all this technology and all the amenities that people dole out to young people, that they could be sort of goofing off or taking things, you know, they've got a much cushier workplace than their predecessors. How do you balance the two things, you know, the enjoying work and having a comfortable work environment and then also increasing productivity? You know, right across the world, I think that young people, Gen Y as they're called, are under a lot of pressure economically. You know, I grew up at a time when there were jobs available to young people, and we certainly worked hard, but not as hard as I think young people now are working. So I think this idea that somehow young people are goofing off is just a myth. I think they're working pretty hard. And actually, although they like to use technology, a recent research has shown that they also like to be in the office. You know, if you're young and living in not a brilliant apartment, probably with lots of other young people, going to a nice air-conditioned office where you can meet your friends is actually what lots of people want to do. So I don't think it's a goofing off generation. In fact, if anything, I think it's a generation that works really hard. And remember that one of the really interesting aspects of this generation is that many of them will live to 100 years old. And that means they're going to be working until they're over 80. And so for them, you know, work becomes much more of a marathon rather than simply a sprint. And I think you'll see that in the way that they're managing their careers over the coming decades. Interesting. And for the 60 plus generation, then to live to 100 years, do you think they're ready for that? Yes, I mean, I think actually that generation is ready, but I don't think corporations are ready for them. I think what's happened over the last decade is a huge emphasis on Gen Y. You know, these young people, they're so wonderful, they're so technically savvy. And in a way, we've sort of forgotten that there's another generation who are now productive at an age that we never imagined people would be. So there are 60-year-olds who, for all intents and purposes, are behaving like 40-year-olds would. In the last generation, and yet we're still expecting them to retire. So my prediction is that the big issue right across the world actually, but particularly in Europe where we have an aging workforce, will be how do you engage, reinvigorate, excite the wisdom that's held in people who are over 60. So that's very interesting, and it brings us to the shift in which you discuss some of these trends. Which of these trends that you see globally are applicable to India also? Well, you know, I think, you know, I look at multinational corporations. So the research that we do has about 60 multinational corporations in it, of which about 6 usually come from India. What I see is that multinational corporations are very similar in terms of the way they behave, whatever country they happen to be in. But of course, if you look at India right now in terms of what's influencing, I would say I think demography is a huge influencer. I used to come to India a lot 20 years ago, and we saw India and China as sort of being almost the same. But of course, what's happening since then is they've become more and more different from each other. And part of that difference is to do with their demography. You know, the one-child family in China is building a very aging population. India remains young, and some people, of course, think that's a dividend. And if you educate young people, it is. So I think that the demographic trend is a big one. And I think, secondly, education. You know, for all sorts of reasons, India hasn't been able to provide a high standard of education for all its children. But, you know, when you think about what's now available on the web, when you think about all the amazing lectures and ideas that are available, and indeed mechanisms for you to certify that you've learnt something, I think you're going to see, really, even in rural India, a real take-up of this virtual web-based education. And I think that's going to have a big effect on India.
leaders need to understand what's going on outside of their immediate context. Increasingly, leadership is about leading multi-stakeholders, be that government, regulators, shareholders, NGOs. And so being able to manage in a multi-stakeholder world, I think is going to be very, very important in the future. What about Indian managers, at the average Indian manager at a company? Maybe he doesn't work for a multinational and wants to become really world class. What opportunities and what advice would you give this person? Well, the interesting thing is that the world is now full of Indian managers, as you know. I mean, they seem to be populating. And I think that's partly because India's always educated a proportion of its people. And also you've had talent factories like Tata and Hindustan Unilever that have been sort of pumping out people. But where does that leave an Indian manager? Well, I would say, what does world class mean these days? I would say three things. Firstly, I do think that leaders need to understand what's going on outside of their immediate context. Increasingly, leadership is about leading multi-stakeholders, be that government, regulators, shareholders, NGOs. And so being able to manage in a multi-stakeholder world, I think is going to be very, very important in the future. Second thing is, if you take a look at those organizations that really seem to survive over a long period of time, almost always what you find is a very collaborative senior team. So I would say that the capacity to work collaboratively, cooperatively with other people is absolutely crucial. And then thirdly, in a complex world, it pays to have a special set of skills or knowledge, something that differentiates you, something that's difficult to imitate, something that's relatively rare. So the third thing I would say to somebody who wants to take a senior position is they have to learn something. They have to continuously learn, and they have to be good at something beyond simply being a manager. Taking a cue from this point about collaboration, do you think that younger generations who are already into social media and are more open and more connected and sharing a lot more are more likely to be collaborative also in the workplace? Well, certainly for anybody who's coming into the workplace now as a young person, they are bringing all the norms and behaviours they have of social media. So for them, working in peer groups is just second nature. They're not happy with hierarchy. But I don't think there's any reason per se that they should be any more collaborative than any other age group. I think they've just mastered the tools of collaboration. But I think in terms of cultures and personalities, I think you're going to find highly cooperative, highly collaborative people right across the age group. And what some companies are doing these days is really trying to find those people and really celebrating the fact that they like to work with others and they like to work through others. That's really interesting. Finally, last question, hiring talent in emerging markets. What advice or considerations would you suggest that people keep in mind? Well, one of the things with environments or like the West at the moment, where you get this very tough economic situation, and indeed, to a certain extent in India, makes you think that there's lots of people available. But the simple truth is that the sort of skills that you need are pretty rare. And so I would say two things about hiring talent. First of all, don't underestimate how hard it is to find the right person, and be as honest as you can about what the job is, so that people can make a decision about whether they've made the right choice. And then the second thing is that in a country like India, don't imagine that you can simply take from a pool. You actually have to develop that pool. And it's very interesting for me to see how many Indian companies are now reaching into the education system to help build job-ready skills. I think it's going to be crucial for India. And by the way, we in Europe are watching very closely what India is doing on that, because we realize that also companies have to take responsibility, not just for picking people, but also for helping universities and schools really develop the right sort of skills. I think that's great, and I think that if we can follow some of the apprenticeship models that were developed so successfully, in the last century in Europe, then we have a lot to learn. Thanks a lot. Thank you for joining us. Thank you very much. Thank you.